everyone, welcome to this class. आज आमे एही क्लास रे जीके रो 100 MCQs प्रैक्टिस करिवा आपनकर अपकमिंग एग्जाम RI AMIN SFS एंड ICDS सुपरवाइजर रो मेन एग्जाम पाई ठीक अछि इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस रहिछि ट्राई करंतु एवं आपण यारो PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे ठीक अछि प्रश्न को भलो भाबरे पढंतु एंड यारो राइट आंसर करिया पे ट्राई करंतु। Question number 1. Which of the following best describes an open economy? Try करिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक open economy हि परिबो open economy निम्नलिखित मध्यरु केउटा होई परिबो open economy माने कोन जेउठारे गोटे आमे कहि परिबा foreign trade allow रहइबो ओके इट मींस कोनोसी बैरियर रहइबो नाही ऑप्शन सी चूज करंतु barrier free international trade is allowed, that is called open economy. Okay, open economy हे परिबो closed economy रे कोन हबो ना आपण foreign trade को करि परिबे नाही that is closed economy. Next question number 2 try करिया which of the following is a characteristic of a closed economy? गोटे closed economy रो characteristic कोन हे परिबो question number 2 जेउठारे कोन foreign trade allowed नो option D no foreign trade is allowed option D हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट इंडिया इज कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ कोंतु इंडिया भारत रो अर्थ व्यवस्था केमिति क्लोज्ड ओपन मिक्स्ड ना सोशलिस्ट भारत रो अर्थ व्यवस्था होची गोटिए मिक्स्ड इकोनॉमी इट मींस बोथ वी कैन से सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट समाजवाद एवं पूंजीवाद उभय को नेकी मिक्स्ड इकोनॉमी भारत रे प्रचलित अटे ठीक अछि इंडिया रो इकोनॉमी होची मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया कहि परिबा ठीक अछि नॉर्थ कोरिया रो इकोनॉमी ता होची क्लोज्ड इकोनॉमी कोनोसी भी फॉरेन ट्रेड सेठारे भलो भाबरे होय नाही। ए डेवलप्ड कंट्री टाइपिकली हैज आपण गोटे डेवलप्ड कंट्री बोली केते बेले कहि परिबे गोटे कंट्री डेवलप हबो जते बेले एहारो हाई एवरेज इनकम रहइबो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर जो कंट्री रो एवरेज इनकम ता अधिक सेही कंट्री को हमें डेवलप कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री रो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक फीचर नुह हाई एवरेज इनकम ता ऑप्शन बी हाई एवरेज इनकम गोटे डेवलपिंग कंट्री रो फ्यूचर हेबो नाही ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय गोटे देश अंडर डेवलप्ड अटे इट मींस कोन सेठारे हाई पॉवर्टी रहिछि हाई पॉवर्टी ठीक अछि हाई पॉवर्टी हेबो यार राइट आंसर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। India's development status is best described as India टा गोटे कोन हम देश गोटे कोन हम देश होची डेवलप्ड अंडर डेवलप ना डेवलपिंग कंट्री ऑप्शन सी डेवलपिंग कंट्री हेबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द मेन मोटिवेशन फॉर बिजनेस इज इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माने पूंजीवाद रो जो अर्थ व्यवस्था रहिछि the main motivation for business is profit को maximization करिवा ऑप्शन बी profit maximization मन रखंतु profit maximization। नेक्स्ट which of the following is a key feature of socialist economy जहा को समाजवाद रो अर्थनीति कहा जाय ठीक अछि समाजवाद ऊपर आधारित अर्थनीति रे कोन थिबो ओनरशिप ता का पाके थिबो गवर्नमेंट हाथ रे थिबो सरकार को हाथ रे थिबो ऑप्शन C is your right answer. Government ownership of business रे कोन हबो that is socialist economy जेमिति रूसिया। नेक्स्ट इन ए प्लान्ड इकोनॉमी प्राइसेस आर गोटे प्लान्ड इकोनॉमी रे प्राइस ता कोन हबो गोटे प्लान्ड इकोनॉमी रे प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑप्शन C is your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 one of the main disadvantage of capitalism is कोन पूंजीवाद रो मुख्य डिसएडवांटेज
मुख्य डिसएडवांटेज टा कोन हे परिबो पुंजीवादर हाई इनकम इक्वालिटी we can say. Next question number 13. Which economy has high government interface and no private property right? It means konosi भी private property रो right रहइबो नाही, that is socialist economy. Option C, socialist economy is your right answer. Next question number 14. Which of the following is a key feature of an open economy? Open economy रे कोन हे परियो फ्री ट्रेड हे परियो, that is गोटे हमें कहि परिबा गोटे भलो इनिशिएटिव टा गोटे ओपन इकोनॉमी रो. नेक्स्ट कहंतु कैपिटलिज्म प्रमोट्स पूंजीवाद कोन प्रमोट करे? पूंजीवाद प्रमोट करे प्राइवेट ओनरशिप. ऑप्शन सी प्राइवेट ओनरशिप वी कैन से. प्राइस मेकानिज्म इज ए फीचर ऑफ प्राइस मेकानिज्म टा गोटे कहारो फीचर हे परिबो? प्राइस मेकानिज्म टा गोटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रो फीचर हे परिबो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following countries follows a mixed economy? देखंतु USA follow करूची, UK follow करूची, India also follow करूची. So all of the above we can say. Okay, all of the above is your right answer. Next, in capitalist economy, who decides what to produce? ये करिवो market force. Market force decide करिवो what to produce गोटे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मध्यरे. Economic planning was first introduced in economic planning टा प्रथमे USSR कोन इंट्रोड्यूस करथिला. USSR हबो मन रखंतु परीक्षा राशि पारे. Which year did the USSR being economic planning क्यों मसिया रे एटा इंट्रोड्यूस होइथिला? 1928 मसिया 1928 रे याको इंट्रोड्यूस करा जाइथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is regarded as the father of Indian economic planning? कहंतु father of Indian economic planning रो father जनक की अटंती? Indian economic planning रो जनक हेउचंदी M विश्व. ऑप्शन डी M विश्वेश्वराय. M विश्वेश्वराय मन रखंतु M विश्वेश्वराय. Next question number 22. The book Planned Economy for India was written by. The book Planned Economy एही पुस्तकटी को किए लिखिथिले? Planned Economy for India एही पुस्तकटी को किए लिखिथिले? M विश्वेश्वराय. Option C M विश्वेश्वराय is your right answer. Who chaired the National Planning Committee in 1938 रे? National Planning Committee जहा 1938 रे गठित होइथिला, यार अध्यक्ष किए थिले? Who chaired? Question number 23. Jawaharlal Nehru. Option C is your right answer. Next question. The 1938 National Planning Committee was set up during 1938 रे National Planning Committee को प्रतिष्ठा करा जाइथिला during British colonial rule. से समय रे ब्रिटिश शासन चलीथिला. Subhash Chandra Bose was the president of which organization when the National Planning Committee was formed? INC रो Indian National Congress रो सुभाष चंद्र बोस कौन थिले? Indian National Congress रो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थिले जेतेबेले नेशनल प्लानिंग कमिटी को गठन करा गला. The Gandhian Plan 1944 was proposed by. ठीक अछि, गांधीयन प्लान को प्रपोज करा जाइतला कहा द्वारा? गांधीयन प्लान को प्रपोज करा जाइतला एन अग्रवाल द्वारा. ऑप्शन सी हबो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड द पीपुल्स प्लान इन 1945? पीपुल्स प्लान 1945 रे किए प्रपोज करथिले? एमएन रॉय. एमएन रॉय मन रखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्वोदय प्लान, very important, the सर्वोदय प्लान was proposed in the year. सर्वोदय प्लान को प्रस्तावित करा जाइतला केउ मसिया रे? 1950 रे. ऑप्शन सी 1950 मसिया रे मन रखंतु. नेक्स्ट. द सर्वोदय प्लान was associated with. सर्वोदय प्लान कहा सहित जड़ित थिला? सर्वोदय प्लान
was associated with Jayaprakash Narayan. Jayaprakash Narayan habo yar right answer. Economic and social planning in India comes under which list of the constitution? Economic and social planning टा आसी जिवो आपनकर concurrent list under रे ठीक अछि concurrent list then कहंतु the term concurrent list is found which schedule of the constitution 7th schedule ठीक अछि concurrent list रे कोन उभय राज्य एवं केंद्र द्वारा निष्पत्ति निया जाय. Next question number 32. Who is called the architect of Indian economic planning? कौन Indian economic planning रो architect भावरे किए जना जानते? Indian economic planning रो architect भावरे PC Mahalanobis. PC Mahalanobis जना जानते architect भावरे. Next. PC Mahalanobis is known for his contribution to 5-year plans रे तांकर contribution थिला. Basically हमें कहि परिबा सेकंड 5-year plans रे तांकर बहुत contribution थिला. Question number 33 option C is your right answer. India adopted economic planning based on the model of कहारो मॉडल अनुसार सोवियत रूस रो USSR रो मॉडल को इंडिया रे अडॉप्ट करा जाइतला. Option C is your right answer. Economic planning in India primarily aims at economic planning रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला मुख्य उद्देश्य थिला सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पे केमिति हमें सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट करि परिबा. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. When was the Planning Commission of India established? कोंतु प्लानिंग कमिशन को केबे भारत रे प्रतिष्ठा करा दितला. प्लानिंग कमिशन को 15 मार्च 1950 मसिया रे प्रतिष्ठा करा दितला. Who was the first chairman of the Planning Commission? Planning Commission रो प्रथम chairman किए थिले? जवाहरलाल नेहरू थिले. Option C हबो right answer. Who served as the last chairman of the Planning Commission? Planning Commission रो last chairman होचंती नरेंद्र मोदी थिले. नरेंद्र मोदी देन एटा नीति आयोग रे रिप्लेस होई जाईची. The first deputy chairman of the Planning Commission was प्रथम deputy chairman होचंती option B गुलजारीलाल नंद. गुलजारीलाल नंद मन रखंतु ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द प्लानिंग कमिशन वाज ए प्लानिंग कमिशन मन रखंतु गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जहा वाज गोटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भाबरे थिला मींस या संविधान रे मेंशन थिला नाही. द प्लानिंग कमिशन वाज अटैच्ड टू व्हिच मिनिस्ट्री? प्लानिंग मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. Who was the last deputy chairman of the Planning Commission? Planning Commission रो last deputy chairman होचंती Montek Singh Ahluwalia. Option C हबो right answer. Montek Singh Ahluwalia. Next. When was the Planning Commission replaced by Niti Aayog? Planning Commission को नीति आयोग रिप्लेस करिछि. That is 1st January 2015 रे नीति आयोग को गठन करा दिथिला. The National Development Council जाको NDC was formed in NDC केउ मसिया रे गठन करा दिथिला. NDC को 1952 मसिया रे गठन करा दिथिला. मन रखंतु National Development Council. ता करंतु एटा द NDC is chaired by NDC रो अध्यक्ष मुख्य के अटंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो मुख्य होचंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके. Who among the following is not a member of the NDC? निम्नलिखित मध्यरु किए NDC रो मेंबर हे परिबे नाही. निम्नलिखित मध्यरु किए NDC रो मेंबर हे परिबे नाही. यूनियन एठी कोला यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हे परिबे, चीफ मिनिस्टर्स हे परिबे एंड प्लानिंग कमिशन रो मेंबर हे परिबे. किंतु ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन मेंबर नहंती. दैट इज NDC रो. The NDC is often referred to as NDC गोटे कोन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो काम कोन गोटे मिनी पार्लियामेंट भाबरे काम करे. ऑप्शन बी मिनी पार्लियामेंट भाबरे काम करिवो जहा 5-year प्लान को एग्जीक्यूट करिवो. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर कोंतु नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन? नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन हिजो? नीति आयोग रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर.
Next question number 49. The first deputy chairman of Niti Aayog was नीति आयोग रो प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन किए थिले नीति आयोग रो प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन थिले अरविंद पानगारिया ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर The current CEO of Niti Aayog as of 2024 The current CEO of Niti Aayog रो current CEO 2024 मसिया पर्यंत जदि हमें कथा हबा ताहले बीवीआर सुब्रमण्यम The main objective of Niti Aayog is Niti Aayog रो मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कौन ही परिबो प्रिपेयर लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स ठीक अछि नीति आयोग रो विजन टा होची 15 ईयर एंड यार एजेंडा होची एवरी 3 ईयर ठीक अछि प्रति 3 वर्ष रे यार एजेंडा को फाइनलाइज करा जाय नेक्स्ट व्हिच मॉडल वाज यूज्ड इन इंडियास फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे भारत रो जो प्रथम पंचवार्षिक योजना थिला एथरे जे मॉडल टी यूज करा दितला दैट इज कोन ता थिला आपनकर ऑप्शन बी ओके हरोद डोमार मॉडल और हरोद डोमार मॉडल को है ऑप्शन बी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रथम पंचवार्षिक योजनाटा एग्रीकल्चर उपरे गुरुत्व दिया देतला एग्रीकल्चर है राइट आंसर द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज तो प्रथम 5 ईयर प्लान रो एक्चुअल ग्रोथ रेट केते थिला 3.6% ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द मॉडल यूज्ड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज द्वितीय पंचवार्षिक योजना रे जो मॉडल को व्यवहार करा देथिला ताहा थिला मोहालनोबिस मॉडल मन रखंतु वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड प्लान एम्फासाइज्ड सेकंड जो 5 ईयर प्लान थिला ताहा हेवी इंडस्ट्री उपरे हेवी इंडस्ट्री को अधिक एम्फासाइज्ड करूथला ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर व्हिच स्टील प्लांट वाज फाउंडेड बाय यूएसएसआर द्वारा आई थिंक भिलाई स्टील प्लांट को कोन करा दितला फाउंड करा दितला भिलाईटा रहउची आपनकर भिलाईटा कोठी रहइबो छत्तीसगढ़ राउरकेला तो ओडिशा देन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ठीक अछि भिलाई हबो राइट आंसर The main objective of the third 5 year plan कौन हबो कोन थर्ड 5 year plan रो main objective कौन थिला self reliance मन रखन self reliance next question number 59 the third plan is also known as third plan को कौन कहै छै third plan is also known as गडगिल plan कहै छै गडगिल ए प्लान को प्रस्तावित करिथिले गडगिल plan next What major reform was introduced during the plan holiday? Plan holiday माने कोन आपनकर जो कोन गोटे गैप आसी जाइतिला ठीक अछि पंचवार्षिक योजना को लागू करा जाउ नथला ड्यू टू भारत चाइना वार कहि परिबा ठीक अछि किबा जो गोटे क्राइसिस आसी जाइतिला तो सही समय रे नाबार्ड को इंट्रोड्यूस करा दितला ठीक अछि सही समय रे कोन सॉरी नाबार्ड नो इंट्रोड्यूस कथा को जाउनी एठी को जाउची व्हाट मेजर रिफॉर्म होना दितला से समय रे बैंक को नेशनलाइज करा दितला ऑप्शन सी बैंक को नेशनलाइज करा दितला देन जदी प्रश्न आसीबो आपनकर दैट इज से समय रे जतले बैंक को नेशनलाइज करा जाईची हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 तते बेले केतोटी बैंक को नेशनलाइज करा दितला तते बेले 20टी बैंक हो 20टी नोट 14टी बैंक को नेशनलाइज करा दितला Option B is your right answer. Okay. Next, the fourth plan was aimed at चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य कौन थिला चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य थिला सेल्फ रिलायंस एंड प्राइस स्टेबिलिटी ऑप्शन सी हबो राइट आंसर द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान वाज गरीबी हटाओ which गरीबी हटाओ थिला पंचम पंचवार्षिक योजनार गोटे नारा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर Which institution was established in 1982 for rural development ପାଇଁ नाबार्ड को 1982 मसिया रे प्रतिष्ठा करा दितला नाबार्ड हेबो राइट आंसर ओके द सेवेंथ प्लान aimed to reduce
सेवेंथ जो 5 ईयर प्लान या गला यार मुख्य उद्देश्य थिला टू रिड्यूस दैट इज व्हाट टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया थिला यार मुख्य उद्देश्य सेबी ठीक अछि सेबी रो फुल फॉर्म कोन हबो सेबी रो फुल फॉर्म कोन हबो कमेंट सेक्शन रे जणातु ठीक अछि स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेबी को एस्टैब्लिश करा दैथिला केउ पंचवार्षिक योजना अंडर रे सेबी को एस्टैब्लिश करा दैथिला सेवेंथ 5 ईयर प्लान मन रखंतु सेवेंथ प्लान हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट द एट्थ प्लान प्रमोटेड जो अष्टम पंचवार्षिक योजना थिला ठीक अछि ता प्रमोट करे काकू लिबराइजेशन हबो यार राइट आंसर उदारीकरण नेक्स्ट द मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करा दैतला केउ मसिया रे मिड डे मील को इंट्रोड्यूस करा दैतला 1995 मसिया रे मन रखंतु नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च करा दैतला 2001 मसिया रे ऑप्शन सी हबो राइट आंसर द फोकस ऑफ द नाइन्थ प्लान वाज नाइन्थ 5 ईयर प्लान रो मुख्य उद्देश्य रहुची सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट नरेगा वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नरेगा को इंट्रोड्यूस करा दैथिला 10th दशमतम पंचवार्षिक योजना अधीन रे नेक्स्ट द 11th प्लान एम्ड फॉर ठीक है जो 11तम पंचवार्षिक योजना थिला यार मुख्य उद्देश्य होची इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन सी मन रखंतु इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास करा दैतला केउ मसिया रे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मसिया रे पास करा दैतला नेक्स्ट द थीम ऑफ द 12th प्लान वाज कोंतु 12th मोट आपनकर 12 टी पंचवार्षिक योजना को लागू करा दैछि ओके तो 12 नंबर जो पंचवार्षिक योजना थिला यार थीम कोन थिला यार वार्ता कोन थिला और वी कैन से अधिक फोकस करथिला कहा ऊपर अधिक फोकस थिला फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ दैट इज द थीम ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर नेक्स्ट द फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन कोन टू फूड सिक्योरिटी एक्ट को केउ मसिया रे पास करा दैतला फूड सिक्योरिटी एक्ट को 2013 मसिया रे पास करा दैतला नेक्स्ट क्वेश्चन द चक्रवर्ती मॉडल वाज यूज्ड इन चक्रवर्ती मॉडल थिला आपनकर केउ पंचवार्षिक योजना को चक्रवर्ती मॉडल भाबरे जणा जाय थर्ड 5 ईयर प्लान हबो राइट आंसर द ग्रीन रिवोल्यूशन बिगेन ड्यूरिंग द सबुज विप्लव आरंभ होइतिला थर्ड 5 ईयर प्लान रे थर्ड प्लान हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनाउंस्ड प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्वाधीन भारतर प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी थिला 6th April 1948 रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु अनाउंस्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948 या को के अनाउंस करथिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी मन रखंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी हबो राइट आंसर नेक्स्ट which category in the 1948 policy was under complete government control 1948 मसिया रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को घोषणा करा दितला निम्नोक्त मध्यरु केउ कैटेगरीटा कंप्लीटली सरकारंकर नियंत्रण थिला दैट इज स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री हो यार राइट आंसर ठीक अछि जमिति आपनकर कोन आसी होछि एटॉमिक एनर्जी आसी जिवो रेलवे आसी गला एमिति स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हे जिवो नेक्स्ट हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 चीफ आर्किटेक्ट किए थिले पीसी महालनोबिस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट 1977 रे जनता पार्टी थिला जनता पार्टी रो सरकार याको इंट्रोड्यूस करथिला नेक्स्ट द 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्फासाइज्ड अधिक गुरुत्व दुथला काको दैट इज कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ठीक अछि ऑप्शन सी हबो राइट आंसर
Which prime minister introduced the industrial policy of 1977? से समय रे प्रधानमंत्री किए थिले? से समय रे प्रधानमंत्री थिले मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर. मने रखंतु, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस करा दैतिला 24 जुलाई 1991 मसिया रे. 24 जुलाई 1991. नेक्स्ट. The finance minister at the time of the 1991 policy was किए थिले? डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले अर्थमंत्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the prime minister when the 1991 policy was announced? से समय रे प्रधानमंत्री थिले पीवी नरसिम्हा राव. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. The 1991 reforms are also known as, that is LPG reforms को जाए. कौन है LPG reforms कोंतु? LPG reforms कौन है परिबो? The term LPG in 1991 reforms stands for LPG होची liberalization, privatization and globalization. Next. Under liberalization what was abolished? जते बेले liberalization ना गला जाको उदारीकरण को जाए. काहा को उच्छेद करा गला? काहा को? लाइसेंस राज. लाइसेंस राज को कौन करा गला? That is abolished. Under privatization what was encouraged? Privatization रे अधिक एनकरेज करा जाउची काहा को? काहा को? डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएस. पब्लिक सेक्टर रे थिला डिसइन्वेस्टमेंट करा गला. इट मींस सरकारंकर नियंत्रण को एठारे कौन करा गला? कम करा गला. अधिक प्राइवेटाइजेशन ऊपर गुरुत्व दिया गला. नियंत्रण और वी कैन से शेयर को. ठीक अछि. ग्लोबलाइजेशन इन द 1991 रिफॉर्म्स एम्ड एट. जेते बेले ग्लोबलाइजेशन करा गला. ठीक अछि. यार उद्देश्य कोन थिला? ग्लोबलाइजेशन रो उद्देश्य थिला इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी. ऑप्शन सी हवर राइट आंसर. A key reason for the 1991 reforms was जेते बेले 1991 मसिया रे ठीक अछि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा दितला. यार मुख्य कारण कोन हे परियो? यार मुख्य कारण थिला मन रखंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ठीक अछि. सेते बेले गोटे क्राइसिस देखा जाइतला. नेक्स्ट. The economic crisis of 1991 was due to. ओके जेते बेले 1991 रे इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जाइतला. यार कारण कोन थिला? That is high fiscal deficit. High fiscal deficit जोगो that is crisis देखा जाइतला. Who is known as the father of economic reforms in India? Father of economic reforms in India के कोंतु? इंडिया रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो फादर भाबरे के जाना जानती? पीवी नरसिम्हा राव. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. पीवी नरसिम्हा राव. The disinvestment policy aims to. disinvestment policy रो मुख्य उद्देश्य कोन? disinvestment policy रो मुख्य उद्देश्य होजे reduce गवर्नमेंट रो जो स्टेक रहछि इन PSUs रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. Which of the following is an example of economic activity? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हबो? कोन इकोनॉमिक एक्टिविटी निम्नलिखित मध्यरु केउटा हे परिबो? देखंतु. Praying in a temple एटा गोटे रिलीजियस एक्टिविटी. दैट इज इकोनॉमिक. एटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फार्मिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन एटा मध्ये हबन. वॉलंटियरिंग इन ए हॉस्पिटल एटा मध्ये हबन. एटा मध्ये गोटे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑप्शन सी. टीचिंग इन ए स्कूल फॉर सैलरी. ठीक अछि. कोनोसी सेवा बदल रे आपण किछि अर्न करछन्ती. दैट इज गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी अटे. हु इंट्रोड्यूस्ड द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को के इंट्रोड्यूस करथिले? आडम स्मिथ. आडम स्मिथ स्कॉटलैंड रो जन इकोनॉमिस्ट थिले. ठीक अछि. से एहा को इंट्रोड्यूस करथिले. नेक्स्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ. माइक्रो माने कोन? जोटा स्मॉल. ठीक अछि. So we can say household and firm level decisions. Option C हबो यार राइट आंसर. आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु. आज लास्ट क्वेश्चन. कौटिल्यस फेमस बुक कोन थिला? अर्थशास्त्र थिला. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. तो यह थिला आपनकर 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100. आपण केतोटी प्रश्न करि परिछन्ते आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे एवं आपण यार पीडीएफ नोट टी एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे. I hope a class टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो. Thanks for watching this class.